Bihar and its chief minister have been in the news for all the wrong reasons since the past few days. But amid all the political slugfest, we've missed out an important issue that the Bihar Assembly was discussing and has now in fact passed. The Reservation Amendment Bill was passed unanimously by the Bihar Assembly. The Bihar cabinet passed a proposal to raise the quota for backward castes to a total of 75% from the existing 50%. Now, Bihar, remember, has a total population of over 13 crore. And here are some key findings of the Bihar caste survey. The general category is 15.5% of the total population. OBCs at 27.1%. Extremely backward castes at 36%. Scheduled castes at 19.65%. And STs at 1.7%. Now, here's what the bill does. The Reservation Amendment Bill, here's what it does. It increases the quota of scheduled castes from 16 to 20%. Extremely backward castes from 18 to 25%. Other backward castes from 12 to 15%, and so on for other backward castes as well. But here's the catch. The benchmark for giving quota has been set by the Supreme Court at 50%. Remember, in the case of Maratha quota, the top court had struck down the increase back in 2021. While Chief Minister Nitish Kumar said that the cap is depriving OBCs and EBCs of opportunities in proportion to their population, here's what we ask on Beyond the Headline. Will the 65% quota hold ground in the Supreme Court? And does this country still need quotas? Tonight on the show, I'm joined by Nikhil Anand of the BJP, Chitranjan Gagan, spokesperson for the RJD, Joseph Mathai, activist, and Parvez Memon, lawyer and senior partner, MZM Legal LLP, joins us. Good evening. Namaskar to all of you. First to you, Chitranjan Gaganji. This quota that has been proposed by your government in Bihar obviously increases and goes beyond the 50% mark which has been set by the Supreme Court. How do you plan to take this forward if and when it does come up in the top court? Of course, it's going to be challenged. How do you convince the Supreme Court that we are going beyond the 50% cap that it has put? श्रेया जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो 50% का कैप लगाया था, उसके पीछे उसका कारण यह था कि कोई आंकड़ा, जातीय आंकड़ा कोई उपलब्ध नहीं था। तो इसी आधार पर उसका कहना था कि किस आधार पर आप जो है सो आरक्षण का कोटा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब तो चूंकि जातीय गणना बिहार में हो चुकी है, सारे आंकड़े सामने आ चुके हैं, किस जाति की क्या आबादी है, उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है, नौकरियों में क्या उनका परसेंटेज है, सारे आंकड़े आ गए हैं। इसलिए हम लोगों को पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें किसी ढंग से, मैं नहीं समझता हूं कि उसके तरफ से कोई अवरोध पैदा होगा। चितरंजन जी, आंकड़े तो पहले भी थे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कैप दे दिया 50% का कि उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। क्या बेसिस रहेगा टॉप कोर्ट में जब आप आर्ग्यू करेंगे कि ये 50% से बढ़ाकर 65% आपने दिया प्लस 10% जो ईडब्ल्यूएस का होता है, टोटल 75% कोटा स्टेट में बढ़ाएंगे आप? नहीं श्रेया जी, पहले कोई जातीय आंकड़ा नहीं था। वह जो 1934 के जनगणना के आधार पर मंडल आयोग जो अपना अनुशंसा किया था, उसी आधार पर किया था। और उसके बाद में जिस समय जातीय गणना हुई थी इस देश में, उसके बाद उसमें पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो ये सब जो है सो अलग अलग देश बन गए। इसलिए जो उस समय का जो आंकड़ा था वह उस पर बहुत ज़्यादा उसको विश्वसनीय नहीं माना जाता, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने वह समस्या थी। इसमें कहीं से कोई नहीं, सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, इनकी कितनी संख्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये सारे मामले आ गए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें किसी ढंग का हस्तक्षेप करेगी या
कोई पाबंदी लगाएगी, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है। Okay. Nikhil Anand, do you resonate with this thought? Do you think that this 65% quota that has been proposed in the Reservation Amendment Bill by the Bihar government does hold ground when it comes to framing policies and schemes on the ground for the people? Or is it just a political gimmick ahead of the 2024 Lok Sabha elections and the fact that the present dispensation, the present government wants to cater to its voter base? Nikhil Anand, are you able to hear me? Yeah. Are you asking me? Yes, yes, Nikhil Anand, please go ahead. Yeah. Are you asking me? Is the question for Yes, me? Mr. Anand, please go ahead. Yes. Okay. See, first of all, there are many myths which have been broken after this caste census has come out. The OBC, EBC, and many communities which are really deprived. So, most surprising thing is that what these governments of Lalu Prasad Yadav and Nitish Kumar was doing, the affirmative action and all the welfare schemes which failed on ground. Now, when the government is initiating to increase the quota by 75%, and these political parties are putting BJP in bad light, I would like to ask that BJP is always in support of this reservation policy, this affirmative action. We have supported the Karpuri Thakur government when the reservation policy was implemented. And later on, we were the part of VP Singh government when the Mandal Commission was implemented. And Mandal Commission is the most scientific study of backward castes. Of course, the Bihar government has found that the population is more than what the quota is given. So if they are initiating this increase, of course we are supporting this affirmative action. But we need to look for modalities how to appreciate, how to uplift them economically. You see that for last 30 years, NCBC, National Commission for Backward Classes, was not having the constitutional status. It is our Prime Minister which gave the constitutional status. And not only this PM Vishwakarma Yojana, it is the first policy initiation to uplift the backward communities economically since independence. And it is going to cater the interest of more than 50% of the population. So we see that the social justice of BJP is different from the social justice of RJD, JDU, which are basically promoted by the family-based parties. These political parties, they want to promote the politics and display the card of social justice as a family business. And here, Lalu Prasad Yadav and Nitish Kumar, they have collaborated together. There is a casteist notion behind this move, this caste census, but I want to just clarify and on firm note that BJP is not at all against caste census. Of course, we are looking for modalities. We already have example of failed caste census in 2011, which has been initiated by the Congress, and Congress failed and breached the trust of OBC community of this country. So my point is that when a modality will be found, caste census will take place. And second thing, this quota initiation by the Bihar government is, of course, we are supporting this move. And the caste census move was planned, initiated by when BJP was the part of Nitish Kumar government. So this propaganda, hue and cry, is just a political move. We want to shed this politics. We want to really do justice for and welfare to these deprived communities, the SC, ST, OBCs. You see the data. चितरंजन जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे निखिल आनंद के को कि ये पॉलिटिकल गिमिक है, मोडालिटीज जो डिटेल्स हैं अभी तक आपकी सरकार ने नहीं बताई हैं, क्या स्कीम्स, क्या पॉलिसीज आप लाएंगे?
नहीं, ठीक है श्रेया जी, मैं इनके एक एक बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। निखिल मंडल जी काफी विद्वान साथी हैं, मैं इन्हें जानता हूँ, लेकिन जो सवाल इन्होंने उठाया है इनकी मजबूरी है। देखिए, भाजपा का दोहरा चरित्र कोई छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ कह रही है कि जो है सो जब यह निर्णय लिया गया था कास्ट सेंसस का, उस समय सरकार में शामिल थे, बात सही है उनका। दूसरी बात, कई उदाहरण दिए, कर्पूरी जी का उदाहरण दिए, वीपी सिंह का उदाहरण दिए, उसके बाद में जो है सो पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चा की। मैं बताया था मंडल आयोग के बारे में, अभी जी कह रहे थे कि मंडल आयोग का जो अनुशंसा आया सामने में, वह जैसो साइंटिफिक कैलकुलेशन था कास्ट सेंसस का, लेकिन मंडल आयोग में ही लिखा हुआ है कि चूंकि यह जातीय आंकड़ा सही उपलब्ध नहीं है, 1934 का जो जनगणना हुआ था उसी के आधार पर मैंने यह रिकमेंडेशन किया है, उसमें स्पष्ट है। अब निखिल जी उसको घुमा रहे हैं। दूसरी बात यह जो कह रहे हैं पिछड़ा वर्ग आयोग और पॉलिटिकल जो कह रहे हैं कि यहाँ राजनीतिक के दृष्टिकोण से इसे लाया गया है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो इस चर्चा करते हैं कि हाँ उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता दिया गया, लेकिन क्या उसका आउटपुट क्या है? पूछना चाहता हूँ कि एक बार भी लालू प्रसाद जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कभी मांग किया है क्या? ये तो लालू जी को पता ही नहीं होगा नहीं कि पिछड़ा वर्ग आयोग को 30 सालों से संवैधानिक दर्जा नहीं है, और इसका घाटा चेयरमैन बनते थे, मेंबर्स बनते थे, और ये पैसे जो पब्लिक एक्सचेकर मनी को घाटा लगा। तो निखिल जी, चित्रंजन जी को अपना पॉइंट पूरा करने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। जवाब सुनने की साहस नहीं है आपको, हिम्मत नहीं है जवाब सुनने का, इसीलिए बीच में लगते हैं इंटरप्ट करने। पहली उसके बाद इन्होंने कर्पूरी, नहीं सुन लीजिए, कर्पूरी जी की सरकार को इनके समर्थन से वह बना था, यह सही है। कर्पूरी जी की सरकार जब बनी थी ये साथ में थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया बिहार में, इन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा कर्पूरी जी के बारे में। ये कर्पूरिया कहां से आई, क्या क्या ना भद्दा भद्दा नारा ही नहीं लगाए, उस सरकार को इन्होंने गिराने का काम किया। और वो नीतीश कुमार जी ने कल पूरा कर दिया विधानसभा विधान परिषद में था, जितनी अश्लील किया। ये जो मंडल आयोग का अनुशंसा लागू किया था तो भाजपा समर्थन में थी। बीपी सिंह जी ने जब मंडल का आयोग का अनुशंसा लागू किया तो जो है सो भाजपा के लोग कमंडल लेकर निकल गए, मंडल के काट में कमंडल लेकर निकल गए, पूरे देश में आग लगाने का काम किए। ये जो कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं कि मैंने समर्थन किया। ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए, ये जो आंकड़े हैं यादव कम्युनिटी का, चित्रंजन जी आपने अपना पॉइंट बोल दिया, आपने अपना पक्ष रख दिया है। निखिल आनंद आपने भी रख दिया है। 7% यादव सिर्फ ग्रेजुएट है इस बिहार में। ठीक है, आपने अपने पॉइंट्स रख दिए हैं। लेट मी गेट इन माय अदर पैनलिस्ट ऑन द डिस्कशन। लेट मी गेट इन जोसेफ मथाई। निखिल जी आपने बोल लिया है, आपने अपना पॉइंट रख लिया है निखिल जी। अब दूसरा चित्रंजन जी और निखिल जी आपने अपने दोनों ने पक्ष रख लिया। लेट मी गेट इन माय अदर पैनलिस्ट ऑन द शो ऑल्सो। जोसेफ मथाई, here unfortunately or fortunately we're talking about caste-based politics, but the larger question in this situation is the fact that as a country, do we still need reservation? Are we still a country that looks towards reservation when it comes to developing our strengths, our weaknesses, or can we go ahead only on the basis of merit? Thank you very much for having me over here. And I would like to welcome the rare consensus that we have seen over here behind the question of reservation, and especially in the context of Bihar. So we should also recognize that India is one of those rare countries which have placed affirmative action very much in the constitution and it's legal. So there's a strong tradition for affirmative action in India, which we need to quite clearly, as the demand is there, we need to carry it forward. But let us also recognize some of the limitations of reservations. So reservations have been very beneficial for
many individuals and their households. But that benefit has not translated to those communities as a whole. And this was very, very much in the mind of Ambedkar ji and the other writers of our constitution. And they had seen reservation very much as a kind of a temporary measure. In the directive principles, they had set out this whole path towards creating a social and economic justice for all, a kind of society in which reservations would not be needed. So we need to just reflect on the fact that what have we done in terms of actions which are there, laid out in the directive principles to ensure that these social hierarchies which exist in society, these economic hierarchies which exist in society are done away with, and there is social justice for all. Thank you. Have we done that, Joseph Mathai? On ground, have we looked away from the realities of caste bifurcations, caste divisions? Have these policies and schemes, which perhaps at one point were made on the basis of caste, have they reached to the man or woman who's standing at the end of the line in the backward castes? Or this is just something that we've been going ahead with and nothing really comes out of it? It's just politicians are playing this game and we're just unfortunately flowing with it. So this caste census that we've just had is one very important step in that direction, because it will allow us to know what's happening on the ground. And these kind of censuses have been a demand of many communities, and there's also been a demand of having a reservation within reservation to be able to reach, as you very rightly put, those people who have not been able to, who have not been reached. But what I'm talking about is there is a need to move beyond the issue of just reservations, because we please need to recognize that with the job market shrinking and the fact that reservations are not there, job reservations are not valid in the fast increasing private sector, we need to recognize those kind of limitations. So reservations need to be extended. But and also the fact that we just have the caste census, but how much of stats and how much of numbers and figures do we know as to, perhaps if one family has an IAS officer, if one family has a police officer or has a government job, then perhaps they don't need it. They've got enough push for the generations to come and move forward. We don't have that kind of details with us. Nikhil Anand, I will come to you. Let me get in Parvez Memon on this. Parvez, we're discussing whether this will hold ground in the Supreme Court if and when it does come up. The 50% cap, of course, remains. But clearly, the Bihar government has surpassed that and they have moved to a total reservation of 75%. Will it really hold ground in the top court? Firstly, let me clarify that I am not here to take any political side, be it the RJD or the BJP. I, to some extent, agree to what Mr. Joseph Mathai has to say. We should bear in mind that the reservation policy in India has been a subject of debate. Some argue that it perpetuates inequality by focusing on caste-based quotas, hindering meritocracy and creating resentment among different communities. The law of reservation is to reconcile conflicting interests of the weaker sections of the society with the stronger sections. But the interest of the community as a whole needs to be protected. The object of provisions that are pro-reservation is not to defeat merit as a whole. The 50% rule, therefore, aids in maintaining the equilibrium in the society. Therefore, in my view, the proposed bill might fail to qualify the rigors of constitutionality as far as the idea of equality is concerned. We must bear in mind that merit cannot be sacrificial lamb at the altar of preferential treatment.
As you all know, that the Honorable Supreme Court of India in the case of Indira Sohani has held that extension of reservation beyond the 50% rule lead to distortion of the constitution. The Honorable Supreme Court has further observed that the dilution of the 50% benchmark would effectively destroy the guarantee of equality, especially the right not to be discriminated on the grounds of the caste. As such, in my view, this bill might fail to qualify the rigors of the constitutionality when it is challenged in the Supreme Court, because it is exceeding the limits as placed to the 50% rule, and which has been followed from time to time. We have seen what happened during the Maratha quota bill that was challenged in the Supreme Court, which was set aside. Even as we speak, the Marathas are agitating in the state of Maharashtra as well. Yeah, and they've given the state government a deadline as well. But Chitranjan ji, आपके विरोधी ये भी कहते हैं कि आपने ये कास्ट सेंसस इसीलिए किया क्योंकि जो वादे आपने गवर्नमेंट जॉब्स के और अनएम्प्लॉयमेंट घटाने के किए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। बिहार आज की डेट में भी हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेकर चल रहा है पूरे देश में, और इसीलिए एक कास्ट सेंसस किया गया जिससे कि ध्यान वहां से हटके यहाँ पे आ जाए। श्रेया जी, जो लोग भी यह कर रहे हैं यह दुष्प्रचार है। आपके जो पार्लियामेंट में जो माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी ने जो स्टेटमेंट दिया है राज्यसभा में, आप उसको देख लीजिए। इस देश के 5 बीमारू राज्य जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उसमें बिहार नहीं है। उसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, तो और शायद मिजोरम है, उसमें बिहार नहीं है। तो बिहार के बारे में केवल जो है सो दुष्प्रचार किया जाता है। बिहार के बारे में एक परसेप्शन बना दिया गया है कि ऐसा यह जो है सो लेबर सप्लायर स्टेट है। लेकिन इस जातीय जनगणना जो हुआ है, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ है, इसमें सारी चीजें आ गई हैं कि कितने लोग बाहर में हैं, कितने लोग जो है सो माइग्रेट हैं, कितने लोग विदेश में हैं, सारी चीजें आ गई। और वो आंकड़ा जो है सो जो भी अब तक बिहार के बारे में प्रचारित किया जा रहा था सब जो है सो मिथ्या है। दूसरी बात जो है सो जो आपने कहा कि जो वादे किए थे, देखिए हमारे जो नेता हैं, जो बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उन्होंने जो वादे किए उस वादे पर खरे उतरने का काम किए। हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं। मैंने जिन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दूंगा, उनसे पूछिए। जिन्होंने कहा बिहार के चुनाव में 2020 के चुनाव में कि अगर मेरी सरकार बनी 19 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा, उनकी सरकार बनी, 19 लोगों को नौकरी नहीं दिए। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा 2020 में एजेंडा था उनका कि बेरोजगारी, और सरकार बने हुए 1 साल हुआ है, 4 लाख लोगों को नौकरी दी गई। यह एक रिकॉर्ड है। एक मुश्त 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, और फिर दूसरा बहाली का विज्ञप्ति भी जारी हो गया, जिसमें भी लगभग 1,20,000 से ऊपर शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। अन्य विभागों से आ रहा है। हमने कहा, हमारे नेता ने वादा किया तेजस्वी जी ने कि मेरी सरकार बनेगी, मैं जातीय जनगणना करवाऊंगा। जातीय जनगणना हुआ। उन्होंने वादा किया कि जो हमारे समाजवादी पुरखों का जो नारा रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उसको भी पूरा कर दिया गया। जातीय जनगणना भी हुआ और उसके हिसाब से उनको भागीदारी, वो संख्या भारी में भी बहुत प्रश्न उठाए जा रहे हैं चितरंजन जी की जो नंबर्स और जो स्टैट्स दिए गए हैं वो करेक्ट नंबर्स और फिगर्स है कि नहीं। बट लास्ट वर्ड टू निखिल आनंद. निखिल आनंद, you wanted to make a point and then I'll wrap this discussion up. Please go ahead. See, first of all, this reservation policy is an affirmative action and it is not a poverty alleviation program. We have so many welfare schemes to alleviate the poverty, but this affirmative action is a must. But isn't that the aim, Nikhil? Nikhil Anand, isn't that the ultimate aim, to get people out of poverty, to get people out of the kind of social injustice that has been done to them over centuries? That's the ultimate aim of reservation, isn't it? No, I think there are different sectors, judiciary, bureaucracy, and other sectors. And these communities want representation.
That is why I want to say that the Jat, Gujar, Maratha, they are all influential community. But why they are demanding reservation? That is why, because they don't have adequate representation in bureaucracy and all the sectors of public life. So it comes from these kind of socio-psychological frustration, as I perceive. But we need to look into these things, and this affirmative action must be supported. And BJP supports this affirmative action and this reservation policy to the core. And we are pro to even And caste Nikhil Anand, census. what does And BJP when have to say to the general reform, category the people caste who are census saying, will where take should place. we go? Reservation after reservation. What does the BJP have to say to the general category people who are questioning reservation after reservation? They're saying you've forgotten us. It is the BJP. It is the BJP which has created 10% reservation for EWS. But we are the party which wants to take along the SC, ST, OBC, EBC, all the communities together. And we believe in Samajik Samrasta. We don't want to do any injustice to any community. We don't want to play the card of casteism. Okay. Don't want to play the family card in politics. The We Okay, whole are Nikhil Anand, you've made your policy is point. based on caste. चित्रंजन जी, last point, जल्दी से और फिर मेरे को wrap. Ideology for us. श्रेया जी, एक चीज मैं और आपको बता देना चाहूंगा कि इस गणना, इस जातीय 20 सेकंड में चित्रंजन जी जो समझाना चाहते हैं जल्दी से. हाँ, जो जातीय गणना हुई है, इसमें जो लोग भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जो भी गरीब हैं, चाहे वे किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों, सबको सरकार ने 2 लाख रुपया सहायता अनुदान देने का निर्णय लिया है. 2 लाख रुपया देगा जो स्वयं वे अपने पैरों पर खड़ा हो सके. हम यहाँ पर जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वाली बात नहीं करते हैं, और उसके बावजूद भी देश जो है सो आज पॉवर्टी लाइन में कहाँ है? विश्व में 100वां स्थान पर है. 2 लाख आपने उन परिवारों को वादा किया है जो 6,000 से कम जिनकी मंथली इनकम है. And that perhaps is a fair point. If you really want to give quota, give it to the economically weaker sections. But perhaps I think as a country, we ought to not just question our politicians, but also introspect as to whether we want to continue with reservations or not. I'll have to wrap this up right now here. Chitranjan Gagan, Nikhil Anand, Joseph Mathai and Parvez Memon, thank you very much, gentlemen, for sharing your thoughts, joining us tonight and sharing your thoughts on Mirror Now on Bihar's Reservation Amendment Bill.